This is a paper discussion, circles and areas related to circles. Let's start. So, first question is, if the radii of two concentric circles are 4 and 5 centimeters respectively. So we have a radii 4 and a radii 5. So we have to find the length of each then the length of each chord of one circle which is tangent to the other circle. Somewhat like this. You have to find this length. So we have 3, we have we have 5, we have 3. So ये क्या हो जाएगा 4. तो length of chord क्या आ जाएगी 4 and 4 8. Sorry. अच्छा 4 given है, my bad. So 4 हमें given है. हाँ, so this is 3 and then ये भी 3 हो जाएगा. So we have 3 plus 3 equal to 6 centimeter length of chord. So 6 would be the answer. समझ आया सबको कैसे करते हैं ये? Basically tangent perpendicular to radius and tangents bisects the chord. दो different theorems use करते हैं. And then do you want me to subjectively solve this? No? Okay. Second देखते हैं. Two tangents inclined at 60 degree are drawn to the circle of radius 3 centimeter, and the length of each tangent will be. So this is a little bit trigonometry involving question. So we have two tangents that are inclined at an angle of 60 degree. So ये 60 degree पे inclined है, and then 60 degree है, तो एक angles क्या हो जाएंगे? Single angles 30 degree हो जाएंगे. So let's call this A, P, Q, and then O. If you know this, कि ये right angle triangle है, so I can redraw this right angle triangle just to see things a little more clearly. So this is A, O, P, sorry, A, O, P, P पे 90 degree है. This angle is 30 degree. हमें length of tangent पूछा गया है, जो कि क्या है? PA. बोलो. यही तो पूछा है. Then the length of each tangent is, यही तो पूछा है. मतलब अच्छा ठीक. So anyways, so this is हमें radius of circle दे रखा है 3 centimeter. So this is, अब हमें रेशियो कौन सा लगाना चाहिए? अगर हमें वैल्यू चाहिए, हमें अपोजिट की वैल्यू चाहिए एंड हमारे पास एडजेसेंट की एडजेसेंट की वैल्यू चाहिए, अपोजिट की वैल्यू है. सो tan 30 लगाते हैं. tan 30 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट OP डिवाइडेड बाय एडजेसेंट AP. तो 1/√3 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय AP. दिस मींस AP कितना आ गया? 3√3. सो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, दोनों 3√3. Again, not very difficult, but yeah, not a very basic question. थोड़ा बहुत दिमाग आपको लगाना चाहिए. But anyways, we have discussed it. From an external point P, the tangents PA and PB are drawn. So we have from an external point, two tangents PA and PB are drawn with circle center O. So circle has a center O. PA, PB, yeah. CD is the tangent to circle at point E. So somewhat like this. अच्छा ये होगा, CD is the tangent to circle at point E, and PA is equals to 14 centimeter. 14 centimeter the perimeter. ये question हम कर चुके हैं एक बार. So this is twice the length of tangent was the perimeter of this triangle. So this will simply be 2 into 14, which is 28. But just to be a little more clear, मैं आपको दोबारा से prove कर देता हूँ. तो perimeter can be written as PC. Perimeter is equals to PC plus CD plus PD. Now PC can be written as PC plus CD plus PD. Now PC plus CD can be written as CE plus ED plus PD.
ओके हमने बस इसे ब्रेक करा है. अच्छा नेक्स्ट वी नो दैट CA is equals to CE, tangents from external point are equal, and then ED is equals to DB, tangents from external point are equal. So this means PC plus CE की जगह हम लिख सकते हैं AC. So we have replaced CE with AC, and ED की जगह हम लिख सकते हैं BD plus PD. Now together with this, just a second. So together with DB and PD ये बनाता है. So we have PC plus CA is equals to PA, and BD plus PD is equals to PB. But since these two are also equal, tangents from external point are equal. So this means this is simply tangents which is 14 plus 14. This equal to perimeter equal to 28. So yeah, this is how you do this question. 28 is the correct answer. Next we have the area of this. बोलो. यही पॉइंट को अगर पीछे ले ले, हाँ दैट इज अ गुड पॉइंट. अगर हम CD इज अ टेंजेंट टू सर्कल एंड PA, अगर हम इस सर्कल में, सिंस हमने तो ये क्वेश्चन कर रखा है तो इसलिए हमें पता है इसमें लेना है, लेकिन अगर हमें नहीं पता हो, मान लो इमेजिन करते हैं somewhat like this. P and then A, B एंड देन तीसरा पॉइंट कहाँ पे लेना है, बाहर ले, इस साइड ले लेते हैं. सो लेट्स सी E इधर बुला लेते हैं ना, यहाँ ले लेते हैं. सो ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा. सो CD है ना. तो दिस इज व्हाट द ट्रायंगल वुड अपीयर लाइक. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, अब ध्यान से देखते हैं. द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD, इस केस में वी हैव 14 है. जस्ट अ सेकंड, वी हैव 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है. So this whole part is 14, this whole part is 14, and radius के बारे में मैं कुछ भी नहीं दे रखा. हाँ या तो, और CD के बारे में कुछ दे रखा है. CD is tangent to circle at point T. PA is 14 सेंटीमीटर. PCD तो I don't think इस केस में हम एरिया निकाल सकते, लाइक पेरीमीटर निकाल सकते हैं, because this given 14, I don't think we can say anything about AC and CE except for the part that they are equal. So even if we take this XX and YY, this does not help us out because the perimeter would come anyways more than 2x plus 2y. So I totally agree. And even when I read this question, I do agree with the fact that this question has to be a little more precise about naming its sides. So it should be a little more precise. But probably when you are giving this question, you would be given a diagram. So even with this question, इसमें diagram intentionally हटाया गया है. It did have a diagram. So majority of the time you will be given diagram, because without it, अगर आप इस side लेके try करते हो question करने का, you cannot solve this because you can never know what is x, what is y. ठीक है? So maybe a question should be a little more precise about, but it cannot be precise about कि कहाँ पे. So that's why it's the problem. Anyways, next करते हैं. Fourth question. The area of the square that can be inscribed in a circle of radius. So square को हमें circle में inscribe करना है. Square है हमारे पास, इसे हमें सर्कल में इंस्क्राइब करना है. इसका मतलब डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, डायमीटर, रेडियस 8 दे रखा है. सो वी हैव 8 plus 8. डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है √2a. नाउ डायमीटर इज 2 times r equal to √2a. So 2 into 8 is equals to √2a. A is equals to 2 into 8 by √2, which is 8 √2. 8 √2 आ गया हमारा A. So we have to find the area of that square. Area is A square equal to 8 √2 square, 64 into 2, which is equals to 128. So this is 128 centimeter square. So you just need to remember some formulas. Diagonal of square. क्या रेक्टेंगल का क्या होगा? रेक्टेंगल का क्या हम निकाल सकते हैं? डायगोनल ऑफ, एक सेकंड रुक, पहले डायगोनल ऑफ स्क्वायर.
can we calculate if there was a rectangle? So if there was a rectangle, we would have been kya? Let's try that. So we would have been given the diagonal, which is under root L square plus B square. So this is, but then L or B, L square plus B square आ गया, and I don't think we'll have any other equation. L square plus B square की value आ गई आपके पास 8. So we have 16 equal to root L square plus B square. So 16 square equal to L square plus B square. But we do not really have any relationship between L and B. So I don't think we can calculate. No, we cannot. Until unless there is some relationship given between length and breadth, something like key length is twice the breadth, thrice the breadth, then we can maybe solve, but without that. एंगल दे रखा कौन सा एंगल? अच्छा ये एंगल, तो कैसे करेगा? हाँ, अगर यहाँ पे मान लो 30 डिग्री दे रखा है, सो मे भी कह सकते हैं. मे भी अगर रेशियो भी दे रखा होता ना, अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो अगर रेशियो भी दे रखा हो ना अपोजिट साइड्स के, तो ओ बाय द वे या सो अगर एक साइड दैट इज मे बी वी आर गेटिंग समवेयर विद दिस. सो वी नो दैट रेक्टेंगल में क्या होता है, अगर ये एक्स एंगल लेते हैं, वाई दे दे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होता है? 180 डिग्री. रेक्टेंगल है, पैरेलल साइड्स है. एंड एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या होता है? 180 डिग्री, है ना? तो लाइक क्योंकि बेसिकली या चारों 90 तो होंगे, बट वुड इट मीन अ स्क्वायर? नो, ठीक है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. बेसिकली जब तक आपको एल और बी के रिलेशनशिप नहीं दिया हो, नहीं दे सकते. एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फिफ्थ, the area of a circle that can be inscribed in a square of 6 centimeter. So अब स्क्वायर के अंदर हमें सर्कल चाहिए. ओके, so we know that the side of the square is equals to the diameter of circle. So side क्या दे रखी है? 6 centimeter. So 6 centimeter का side है, so diameter equal to 6. This means radius is equals to 3, which is 6 by 2, which is 3 centimeter. So area कितना आ गया? Pi r square. This is equals to pi into 3 square, 9 pi. So yeah, simple. आगे बढ़ते हैं 2 मार्कर्स पे. By the way, since I'm discussing this paper, you know what to do. You have to complete corrections. Sorry. सही तो लिखा. Complete corrections. मीनिंग आपको, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में आधे नंबर भी कटे हैं तो भी आपको अटेम्प्ट करना है, रिमेंबर दैट. एंड अगर क्वेश्चन पेपर में से चॉइसेस तो है नहीं, लेकिन अगर चॉइसेस होती है तो आपको और पार्ट भी अटेम्प्ट करने हैं. दिस इज व्हेन आई से करेक्ट. सो अगर किसी क्वेश्चन में आपका आधा मार्क्स भी कटा हुआ है, यू विल हैव टू रीडू इट. Maybe you have to redo the whole paper, but do correct it. Complete correction. That is your homework. I will be checking it. जो गलत है वो करना है, नॉट पूरे गलत. अगर थोड़ा भी आधे मार्क्स भी कटे इसमें तो आपको रिपीट करना है. 6 देखते हैं. इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. AOB PAPB टेंजेंट्स सर्कल. निकालना क्या है? फाइंड AQB. AQB फाइंड करना है हमें. अगर if the tangents and ABQ, sorry, APB given है हमें 75 डिग्री. अगेन ए क्यू भी फाइंड करना है. ठीक है, सिंपल तो है. तो भी आपको पता है इन दोनों का सम वी नो दैट एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. एंड देन आपको पता है एंगल A is equals to angle B is equals to 90 degree because tangent perpendicular to radius. Okay, now
इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो एंगल P प्लस एंगल P दे रखा है 75, 75 प्लस 90 प्लस एंगल O प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री. So angle O is equals to 360 minus 90 minus 90 minus 75, which is equals to 105, I guess. 105 degrees. So now this is 105 degrees. Class time आ जाओ. So now 105 degree. Now angle AQB is equals to half angle AOB. Degree measure theorem. The angle subtended at the center is, जो center पे angle subtend होता है उसका half होता है rest of the circle पे. So this is equal to half of angle 105 equal to 52.5 degrees. So yeah, this is your answer. Simple. Degree measure theorem. पूरा लिखना, DMT मत लिखना. This was 6th question. Let's take a look at 7th question. In covering S meters, a circular wheel of radius R makes. So we have a circular wheel of radius R in covering distance S meter. The total distance इसने cover करा है S meters. एक revolution में कितना cover करेगा? One revolution में 2 pi R cover करेगा. ठीक है? So N revolutions में कितना cover करेगा? N revolutions में cover करेगा N into circular wheel makes, yeah. So we have N revolutions, N into 2 pi R is equals to total distance S. So N is equals to S upon क्या आ जाएगा? 2 pi R. So is the statement true? बिल्कुल true. And क्यों? हमने दिखा दिया. So basically you can also write the formula here. N is equals to number of revolutions is equals to total distance divided by circumference of wheel. So this is a formula that we have made just now. Anyways. तो मार्क्स नहीं मिले. मिले क्या कर रहे तुम? तू नहीं करा ना बेटा. यूज कर. If the circumference of a circle increases from 4 pi to 8 pi, then what about its area? So पहले हमारा circumference था C1 is equals to 2 pi R1 is equals to 4 pi. So pi cut गए 2 and 2. So R1 is equals to 2. Now C2 is equals to 2 pi R2 is equals to 8 pi. So this pi cut गए 2 4 8. R2 is equals to 4. So हमें पूछा गया है find the area. What about its area? तो हमारा area 1 क्या हो जाएगा? Area 1 is equals to pi R square R1 square is equals to pi into 2 square equal to 4 pi. And then A2 is pi की वैल्यू डाल सकते हो. A2 is equals to pi R2 square is equals to pi into 4 square equal to 16 pi. So area क्या हो गया? Area 4 pi to 16 pi हो गया, meaning area became 4 times when circumference was twice. So like just an observation. अगर आप सिर्फ यहाँ तक कर दो तो भी ठीक है, पाई की वैल्यू डाल दो तो भी ठीक है, नहीं डालो तो भी ठीक है. क्या? You had to show this. This is what has been asked. Then what about its area? क्या? पाई की वैल्यू डाल दो. हाँ डाल सकते, वही कह रहा हूँ. दोनों सही, दोनों सही. दिखाओ. The perimeter of a sector of circle is of radius 5.2 is 16.4 centimeter. Find the area of the sector. तो ये मैं आपको करा चुका हूँ. पेरीमीटर के लिए हम क्या करते हैं? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर
is equals to the perimeter which is basically ये length of arc है, length of arc is the perimeter, so length of arc is equals to कितना दे रखा है हमें 16.4 and radius हमें दे रखा है, तो we have theta upon 360 into 2 into 22 upon 7 into radius कितना है 5.2, so 52 upon 10 is equals to 164 divided by 10. So इसे सॉल्व करो कितना आ रहा है थीटा लाइक 2, हाँ मतलब वही करंट कितना जो भी कट रहा है कट के फाइनल थीटा क्या आ रहा है अच्छा वो तब हाँ वो भी ठीक है वैसे। सो इसके बाद एरिया के लिए आपको क्या करना है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस थीटा अपॉन 360, ये देखो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, ठीक है, इसकी वैल्यू ले लो और सब कुछ उधर भेज दो, तो दिस इज थीटा अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 164 बाय 52 इंटू 2, तो यहाँ डाल दो ये वैल्यू, दिस इज 164 अपॉन 52 इंटू 2 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 52 इंटू 52 बाय 10, so we have yeah 860 into 24, so we have 82 into 52 by 100, so 82 into 52 कर लो आ जाएगा आंसर 2 to 4, 8 to 16, then 5 to 10, 8 5 40, 4 6 to 42.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ रहा है ना, यही आ रहा है नहीं, मैंने क्या करा फिर, कुछ गलत करा मैंने नहीं, मैंने थीटा अपॉन 360 पाई की वैल्यू निकाली है सर, तो आई डोंट सी एन इशू, व्हाट्स द इशू, आपका आंसर क्या आ रहा है 15.6 15.6 सबका ही आ रहा है, सबका ही आ रहा है, फिर तो सही होना चाहिए, देखता हूँ मैंने क्या गलत करा है। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, so theta upon 360 can be written as एक सेकंड रुक जाओ बेटा, theta upon 360 pi is equals to 16.4 upon 2r। अच्छा ओ माया, अच्छा ठीक है ठीक है, 2 पाई आर से इक्वेट होगा क्या, पेरीमीटर दे रखा है माया मैम, लेंथ ऑफ आर्क नहीं दे रखी, पेरीमीटर दे रखा है, so 2 pi r is 16.4, this means 2 into 22 upon 7 into r is equals to 164 by 10, so यहाँ से आप r लिख सकते हो डायरेक्टली, r is equals to 164 into, या फिर पाई में छोड़ दो तो पाई कट ही जाएगा इवेंचुअली, क्या now I got it, my bad, took a lot of time, so this is your सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर में हमें लेंथ ऑफ आर्क तो होती है, विच इज लेंथ ऑफ आर्क इज हमें दे रखी है, जो भी लेंथ ऑफ आर्क आएगी विच इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, देन हमें सिंस पेरीमीटर दे रखा है तो हमें इसकी रेडियसेस भी 2 बार ऐड करना होगा, तो आर प्लस आर, सो वी हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r विच इज इक्वल्स टू 16.4, या तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दे रखा है, मीनिंग हमें पूरे इस सेक्टर का पेरीमीटर दे रखा है, नॉट जस्ट सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ योर सेक्टर इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ आर्क, बट पेरीमीटर में आपको ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड से 2r, सो नाउ यू हैव, अगर आप 2r कॉमन ले लो
आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो इसमें, दैट्स बेटर. सो 2r वी हैव थीटा अपॉन 360, वैल्यू निकालनी पड़ेगी. एंड आपको देन ये वैल्यू निकाल के इसमें दिस इज एरिया में इक्वेट करना होगा, विच इज पाई आर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. सो निकाल लो इसे. दिस इज क्या रहे, थीटा अपॉन 360 से पहले इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 52/10 प्लस 2 इंटू 52/10 इक्वल टू 164/10. So let's just take the LCM here. यहाँ पे आप कॉमन लोगे तो you'll get 2 इंटू 2r कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इंटू 52/10 ब्रैकेट्स में पाई 22/7 प्लस 1 equal to 164/10 theta upon 360 into 22/7. So yeah, let's just solve this. So we have 10 cut and this is what 164 and 52. So किससे डिवाइड करें इसे क्या, तो डायरेक्टली सर you try 360 into 2 pi I देखा आपको उधर निकाल देंगे सर 2r minus. अच्छा तुमने उस साइड, अच्छा 2 पाई आर थीटा, हाँ ठीक है वो भी ठीक, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर देते हैं. सो आप थीटा अपॉन 360 निकाल लो, इसको 2r माइनस करके एंड देन थीटा अपॉन 360 इंटू, यार जो आप गुड पॉइंट, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी. 16.4 minus 2r, so which is 2 into 5.2, which is 16.4 into 10.4, sorry, minus 10.4, minus 10.4 theta upon 360 into 2 pi r. So theta upon 360 into 2 pi r is equals to 16.4 minus 10.4 is, so we have 3, so theta upon 360 pi r is equals to 3. So यहाँ पे वैल्यू डाल दो. दिस इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r इंटू r. सो इस पूरे की वैल्यू में पता है कितनी है, 3 इंटू वी हैव 5.2. सो दिस इज इक्वल्स टू 15.6 centimeters. Okay, yeah, that makes a life a lot more easier अगर आप पहले माइनस कर दो तो. ठीक है, so yeah, thanks for helping out. नेक्स्ट करते हैं. समझ आ गया सबको, करा के समझ तो आ गया होगा, बस कैलकुलेशंस फॉर द प्रॉब्लम समझ तो आपको आ गया होगा. 10 देखते हैं. फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P the tangents PA and PB are drawn to the circle with center O. सो एक्सटर्नल पॉइंट P से हमने दो टेंजेंट्स बनाए हैं PA and PB with center O. Yeah, PAB is 50 degree. So PAB is 50 degree. ये एंगल हमें 50 डिग्री दे रखा है एंड हमें फाइंड करना है AOB. ठीक है, अगर ये 50 डिग्री है एंड हमें पता है पूरा एंगल कौन सा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है. PAO 90 होता है. सो 90 माइनस 50, ये एंगल क्या आ गया बोलो, 40 डिग्री. ये 40 है तो ये भी क्या आ गया 40 डिग्री. सो इन दोनों का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये कितना आ गया 100 डिग्री, है ना, सिंपल. सो दिस इज 100 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से. 11 देखते हैं क्या पेपर, ये बहुत ही बोर्ड लेवल पेपर है. This is not a difficult paper. This is not like, I'm very sorry to say this, but this is an honest thing. This paper is not made intentionally difficult or easy. This is a board level paper. अगर आपको इसमें मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, means you are okay, मतलब बोर्ड्स के लेवल के लिए आप ठीक हो. आई एम नॉट सेइंग कि तुमने उससे बेटर तैयारी कर रखी, तुम्हारी तैयारी अप टू द मार्क है जितनी होनी चाहिए, नॉट बेटर, नॉट, बट अगर तुम्हारे इसमें मार्क्स नहीं आ रहे, मींस यू आर सीरियसली बैड एट दिस चैप्टर.
बिकॉज इससे आसान क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएंगे. So I think that No matter what. The thing is, see, a lot of students say this to me and then I say them the exact same thing. This is something जो हम अपने आप को दिलासा देने के लिए कहते हैं. मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, मैंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा, या फिर ये कंप्लीट नहीं करा, या मैं पढ़ लेता तो मेरे मार्क्स आ जाते. बेटा धोखा खुद को दे रहे हो. अगर पढ़ लेता या नहीं पढ़ लेता इज टोटली आपकी लाइफ में कोई चेंज. मैं नहीं है देखने आने वाला, किसी को फर्क नहीं पड़ता आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे. सो वो जो खुद को हम दिलासा देते हैं ना कि अगर मैं पढ़ लूँ तो मैं टॉप कर जाऊंगा, बस मैं पढ़ नहीं, वो धोखा है बेटा, वो धोखा है. ऐसा होता तुम कर चुके होते, इतने दिन वेट नहीं कर. तो वो धोखा खुद को मत दो. एंड मुझे तो क्या ही देके फायदा है. बिकॉज दैट इज नॉट अ फ्लेक्स. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक दिस इज अ फ्लेक्स कि हम बिना पढ़े जितने नंबर आए आ गए ना. ये फ्लेक्स नहीं है. दिस इज सैड कि you had time, you could have studied, you did not study. So like मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था ना, इट्स लाइक कि कोई गिर रहा था पहाड़ से एंड तुमने उसे उसको हाथ नहीं दिया एंड तुम घर आके बोल रहे हो कि मैं उसे हाथ दे सकता था, बचा सकता था, बट आई लेट हिम डाई. एंड तुम इस पे फ्लेक्स कर रहे हो बिकॉज दैट पर्सन डाइंग देयर इज यू. बिलीव मी. सो डू नॉट फ्लेक्स ऑन दैट. ये एग्जांपल याद करना जब भी तुम्हें फ्लेक्स करने का मन करे. एनीवेज, सो 11th क्वेश्चन करते हैं. सो वी हैव अ ट्रायंगल एंड इसमें हमें दे रखा है ए बी बी सी सी ए. So AB C is your triangle. AB is given 12 centimeter. AC is given, sorry, BC is given 8 centimeter and CA is given 10 centimeter. पूरे की length है. Yeah, we have to find the length of AD. ये D, F and E है. Yeah, touches the side. If the lengths of AB, BC, CA 12, find the length of AD, BE and CF. So मान लेते हैं हमारा AF अगर X है. So let's say AF is equals to AD is equals to X. ठीक है. Tangents from external point are equal. ये लिख लेना प्लीज, मैं दोबारा नहीं लिखा था. तो ये X है, ये X है. Now FC and EX, तो ये Y, sorry, CF is equals to CE is equals to Y ले लेते हैं. सेम रीजन, टेंजेंट्स ऑन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. तो ये Y हो गया, ये भी Y हो गया. एंड लास्टली BE is equals to BD. So BE is equals to BD equal to Z ले लेते हैं. टेंजेंट्स ऑन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. Now we can very clearly see that AF plus FC is equals to 10 given है. So X plus Y क्या है? 10. Similarly आप लिखोगे ABE plus EC is equals to 8 given, क्योंकि ये आपको पता है ये क्या है, Z plus, ये Z है, Z है, Z plus Y is equals to 8 and then lastly इसी तरीके से Z plus X equal to 12. So Z plus X equal to 12. किसी भी एक की वैल्यू निकाल के रिप्लेस कर दो तो Z is equals to, हमारे पास 3 इक्वेशंस है. Now this is a linear equation in 3 variables. X plus Y is equals to 10 and then Z plus Y is equals to 8 and then Z plus X is equals to 12. यहाँ से वैल्यू प्लेस कर देते हैं. Z is equals to 12 minus X. इसकी वैल्यू इन दोनों में डाल देते हैं. So X plus Y तो जरूरत ही नहीं है इसमें Z की. नेक्स्ट Z में यहाँ पे डालेंगे 12 minus X plus Y is equals to 8. So we have X minus Y उधर चला गया. So 12 minus 8 4 is equals to X minus Y. So हमारे पास दो इक्वेशंस है. X plus Y equal to 10 and X minus Y is equals to 4. इक्वेशन ऐड कर देते हैं. 2X equal to 14, X equal to 7 आ गया. X equal to 7 है. 7 तो Y कितना आ गया? Y is 7 minus 4 which is 3 and then Z is equals to 12 minus 7 which is 5. So we had to calculate. नहीं, वो नहीं है. उसमें आपको साइड्स निकालनी होती है जब आपको टेंजेंट्स और रेडियस दे रखा होता है. इसमें बहुत सिंपल है, इसमें इतना नहीं है कुछ. तो बस ये आ गए एक्स वाई जेड आ गए तो आप ए डी बी ई एन सी एफ निकाल लोगे. ए डी इज इक्वल्स टू एक्स
and BE is equals to Z. Sorry, BE is equals to Z, and तीसरा CF is equals to Y. Y लिया था ना हमने? हाँ, तो CF is equals to Y. तीनों आगे समझ आया? Like it's an easier question. इसको ऐसे करने में स्लो सेक्टर से बाय सेक्टर बनाने के ऊपर जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं. सिंपल क्वेश्चन है, क्यों मुश्किल बना रहे? The thing is, I think ये सिर्फ rectangle का है, लेकिन students have taken it full, so like I will be correcting it because. But why would you think ये पूरा है? Like just I don't see a reason why you would think कि ये पूरा है. Like अगर arrows भी पूरे होते तब like क्या? अगर ऐसे बना होता तो मैं फिर भी एग्री करता कि तुम 38 बुला रहे हो उसे. क्या? चलो मैं देखता हूँ. Anyways, देखता हूँ मैं. 12th क्वेश्चन देखते हैं पहले. दे दूंगा बेटा, मार्क्स दे दूंगा. मतलब इट्स नॉट अ क्वेश्चन जो मैं कहूंगा कि लाइक कॉन्सेप्ट गलत करा तुमने तो दे दूंगा. हाँ ठीक है, ठीक. अरे दे दो, और क्या करूँ अब, जान दे दूं, मार्क्स दे दूं. हाँ तो बस चिल, मतलब पढ़ाने मत दो तुम. अच्छा ये देखो, आपको काउ इज टाइड टू विद अ रोप. हमारे पास प्लॉट है जिसकी डायमेंशन है 20 मीटर बाय 16 मीटर, एंड देन काउ को टाई कर रखा है हमने इस रोप से घास चरने के लिए. तो चरने देते हैं इसे घास. 14 मीटर रेडियस है, रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री होगा. नाउ फाइंड द एरिया काउ कैन ग्रेज. अब तुम सोच के देखो, तुम्हें कोई जरूरत है नहीं डायमेंशंस के रेक्टेंगल की. काउ इतना ही ग्रेज कर सकते हैं जो एरिया ऑफ सेक्टर है. यू डोंट रियली नीड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. क्या? हाँ क्वाड्रेंट. सो बेसिकली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है तुम्हें सिंपली. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 1/4 pi r square is equals to 1/4 into 22/7 into radius is 14 into 14. 7 to 14, and then we have 11. So 11 into 14 is कितना आया? 154 मीटर स्क्वायर, जो वो जितनी दूर में घास खा सकती है. यू बेसिकली डिड नॉट नीड दिस थिंग. ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है. नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे दोनों क्लास में. एक बैच 1 में स्टार्ट होगी, बैच 2 में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी. आज क्या वेडनेसडे ना, फ्राइडे ऑनवर्ड्स. सरफेस एरिया की असाइनमेंट अपलोडेड है, कर लेना. डाउट्स होंगे पूछ लेना. क्लासरूम पे अपलोडेड है, तो मैं देख रखी है ना सारे चैप्टर्स के अपलोडेड है. कर ले, बोलो करता हूँ. पहले द मोर लॉजिकल वन की मुझे लग रहा है यहां से यहां तक ही होंगे. तो लेट्स टेक द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ एज 38 एंड ब्रेथ एज 10. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 semicircles करना होगा हमें. सो वी हैव लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 into half pi r square. 2 कट गए. वी हैव 38 into 10 प्लस क्या कट तो गया. अच्छा सॉरी. एनीवे, सो दिस इज 22/7. 3.14 लेना ना इसमें. 3.14 लेते, ज्यादा आसान होगा. 3.14 into r square is 10/2 into 10/2. So we have 380 plus 314 divided by 4. 4, 7, 28, then 34. So we have 4, 8, 32, 4, 5, 78.5. So 380 plus 78.5. This is equals to 458
0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अगर दूसरे तरीके से करें, एज्यूमिंग कि ये पूरी 38 है, तो उस केस में आपकी लेंथ जो आ जाएगी वो 38 -5 10 आ जाएगी। तो दिस इज 28। तो बस एक ही डिफरेंस आएगा इसमें कि यहाँ पे आपको फाइनल स्टेप में 280 प्लस 78.5 करना होगा, एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग द सेम, विच इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा 358.5 centimeter square. So like these are the two answers that are possible. Okay, yeah, anyways next करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्यों है, मुझे अभी तक नहीं समझ आया। सर आपने That's all properly not remaining. मैं दिखा दूं तुम्हें कैसे करना है, अगर तुम नहीं कर रखा होगा तो मार्क्स दे दूंगा। 14 देखते हैं। So in the given figure, two circles touch each other at point C. Prove that the common tangent bisect the tangent at. तो given लिखा होना चाहिए पहली बात आप। हाँ बेटा, सारे ही 3 मार्क्स के चल रहे हैं। कौन सा देखते देखते। गिवन इसमें दिया है, what's given that PQ is tangent to PQ and TC. Tangents are tangents, simply are tangents. To prove भी लिखना, to prove bisects the common tangent at P and Q. Okay. PT is equals to TQ. मतलब this is like, what else will you prove? So proof. We know that TP is equals to TC, tangents from external point, common external point. Then we have TQ is equals to TC, tangents from external point. दोबारा लिखो question from 1 and 2. बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन। From 1 and 2, TP is equals to TC equal to TQ, implies PT is equals to TQ, hence proof. सर आपने भी नहीं लिखा जिसके नंबर दे रहे हैं किस चीज के मार्क्स कटे? given to prove नहीं लिखा बात आप PD उसके लिए पॉइंट में काटेंगे सर मेरे को नहीं कटने नहीं कट सर डेट नंबर काटेंगे सर कॉमन टेंस ठीक है, सही है। that given to prove आधे में सर आधे में 15 देखते हैं। So two tangents PQ and PR are drawn from external point with the center O. So PQ and PR are drawn from an external point with the center O. Prove that अच्छा RP है, sorry QORP is a cyclic coordinate. So we have, हमें प्रूफ करना है, गिवन है हमें PQ and PR are tangents. To prove PQOR is cyclic. Pretty simple question. We know that angle P plus, अच्छा by the way, angle Q is equals to angle R is equals to 90 degree. Reason लिखेंगे, क्या reason है? Tangent perpendicular to radius. Now angle P plus angle Q plus angle R plus angle O is equals to 360 degree. Reason, angle some property of quadrilateral. Now P हमें नहीं पता लेकिन हमें Q पता है 90 डिग्री, प्लस हमें एंगल R पता है 90 डिग्री, प्लस एंगल O पता है हमें इक्वल टू
नहीं पता हमें, तो 360 डिग्री, तो एंगल P प्लस एंगल O क्या आया, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री विच इज 180 डिग्री। अगर अपोजिट साइड्स का सम क्या है, 180 डिग्री है, दिस इम्प्लाइज पी आर ओ क्यू इज अ साइक्लिक quadrilateral. That's all. Hence proved. Let's see the 16th question. So in the figure, अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूं लेकिन दोबारा करेंगे। सो इट हैज द फॉलोइंग फिगर, मैं फिगर ले लेता हूँ एक बार, विल सेव सम टाइम। बोलो, देखता हूँ। ओके, सो T इज अ पॉइंट ऑन OT सच दैट, अच्छा ओके, हमें निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। हमें AB की लेंथ निकालनी है। ओके, सो अगर हम ये वाली लेंथ सिमिलैरिटी से करें या फिर पाइथागोरस से, पाइथागोरस, चलो पाइथागोरस से करते हैं। वी नो दैट एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये तो आपको पता होना चाहिए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, जिससे आप पाइथागोरस लगा पाओ पहले। ठीक है, एक का दोनों के रीजन क्या है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। ओके, नाउ ये चीज मिल गई हमें। नाउ वी नो दैट PT स्क्वायर, मान लो इसे हम x ले देते हैं। सो अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x। सो PA is equals to AE is equals to x ले लेते हैं, tangents from external point, external point, common external point. So we have now we know that PT square plus OP square is equals to OT square. So Pythagoras के according PT square plus OP square is equals to OT square. So we have let's say whatever this is, 80, इसको y ले लेते हैं, तो 80 को y ले लेते हैं। So we have PT which is x plus y square plus OP which is 5 square is equals to OT which is 13 square. So x plus y square is equals to 13 square minus 5 square. So we know that this will come out to be 12. 169 x plus y आ जाएगा 12 because 13 square minus 5 square, 169 minus 25, 144 and root of 144 is 12. So x plus y आ गया 12। ठीक है, अच्छा सिंस प्लस है तो फर्क नहीं पड़ता, हम x plus y लिखे y plus x लिखे, माइनस होता तो दिक्कत होती। नाउ ये आ गया, अब नेक्स्ट ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगाते हैं विच इज दिस ट्रायंगल AET। तो पहले हमने लगाया ट्रायंगल में इन ट्रायंगल OPT, अब हम लगाएंगे इन ट्रायंगल AET। सो AET में वी नो दैट AE स्क्वायर प्लस ET स्क्वायर इज इक्वल्स टू AT स्क्वायर, है ना। सो अच्छा बाय द वे, अगर यहां से यहां तक 5 है तो ये कितना आ जाएगा, 13 माइनस 5 विच इज, बोलो, 8। तो ये 8 आ गया, ये 5 आ गया, तो वैल्यूज डालते हैं। वी हैव x AE विच इज x स्क्वायर प्लस ET विच इज 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, है ना। सो या यहाँ पे आप किसी भी एक को रिप्लेस कर लो। सो लेट्स से यहाँ पे हम y इज इक्वल्स टू लिख देते हैं 12 माइनस एक्स, यहाँ पे डाल देते हैं तो x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विच इज 64 is equals to 12 minus x whole square. So x square plus, यहाँ पे लिख रहा हूँ, this is x square plus 64 is equals to 12 square 144, a square plus b square minus 2ab which is 24x, x square करके 24x is equals to 144 minus 64, 144 minus 64 is
कितनी है, कितना 80. So x is equals to 80 divided by 24 which is 10/3 आ रहा है. x 10/3 आ गया. अगर x 10/3 है, so by similarly AE is equals to x equal to 10/3. Similarly, by the same argument, this is what I'm writing formally. By the same argument, EB is also 10/3. So AB is equals to 10/3 plus 10/3, which is equals to 20/3 centimeter. This is a question जो आप like NCERT में है ना, ये कर चुके हैं, तो like cannot be easy, but you should be able to solve this because anyways, sad 17 देखते हैं. Now for question 17th, आपको simply क्या करना है, area of shaded region के लिए आपको area of rectangle plus area of semicircle करना है. तो area of rectangle is length into breadth and area of semicircle क्या होगा, area of semicircle is plus pi r square by 2. ये डायग्राम प्लीज दोबारा बना लेना. क्यों जरूरी है, because you'll show how you got the radius. So you know this whole part is 6 meters, this whole part is 4 meters and this is 8 meters. अगर ये 6 है 4 है तो उसका डिफरेंस कितना है, 2 meters आ जाएगा. So this is equal to the radius. So this radius is given 2 meters. Now we can just simply substitute in the values. 8 into 4 plus 22 3.14 तो नहीं लेना, नहीं, तो 22/7 into 2 square which is 4. So 4, अच्छा हाफ भी है, half, so we have 11. अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो 8 plus 11/7, so we have 7 8 56 plus 11/7, so we have 4 into 67/7. So we have 268/7. अब डिवाइड कर देते हैं तो 7 3 21 and then we have 58, so 7 8 56.7 214 and then 60, so 7 8, so something like this, 38.28 meters square. यही आ रहा है ना? Okay. So yeah, this is your answer. Simple question, not that much difficult. 18th, from point T outside a circle with center O, TP and क्या 17 में फाइनल एरिया के लिए स्टेटमेंट लिखनी है आपको. Hence the area of shaded region is this, and then ये आप डायग्राम दिखाना जरूरी है. अगर डायग्राम नहीं दिखाया आपने तो आई डोंट रियली नो कि आपने रेडियस 2 कहां से निकाला. सो यू शुड रीड ऑल द डायग्राम एट लीस्ट. नाउ फ्रॉम अ पॉइंट T outside the circle, so we have a point T outside the circle, TP and TQ are drawn. So we draw two tangents, TP and TQ. Let's call the center O and prove that OT is the bisector of line segment PQ. Right bisector, मतलब perpendicular bisector. So we have given as तो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें TP TQ are tangents, TP and TQ tangents. to prove है OT perpendicular to PQ comma, अगर ये पॉइंट D बुलाऊं मैं तो PD is equals to DQ. So there are a few ways of doing this. What I will be using is what should I use? Congruency से कराऊं, congruency से करा दूं.
तो कॉन्ग्रुएंसी से करने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। कौन से ट्रायंगल्स को? ये देखो, ये पूरे बड़े ट्रायंगल्स। ये करना जरूरी है इस क्वेश्चन में, बिकॉज दिस विल गिव अस वी नो दैट TP इज इक्वल्स टू TQ, tangents from external point, external common point, RHS की जरूरत नहीं। TP equal to TQ, TO is equals to TO common, and then PO is equals to OQ radii. This means triangle TPO is congruent to triangle TQO by SSS. This means angle 1 is equals to angle 2 by CPCT. तो angle 1 क्या आ गया? Angle 1 is equals to angle 2 by CPCT. Now we have next. So now we also know that angle 3, 4. So since TP equal to TQ, TP is equals to TQ. अब छोड़ना, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। Now in triangle, अब हम दूसरे triangles ले रहे हैं। So we know that TP is equals to TQ. ठीक है, from 1 लिख दो दोबारा, अगर तुम्हें सेम रीजन नहीं लिखना है, वरना दोबारा सेम रीजन भी लिख सकते हो। Then angle 1 is equals to angle 2 from 2, and then अब हम इन दोनों triangles की बात कर रहे हैं, अंदर वाले triangles. So this is the two triangles we are considering. इसमें we need TD equal to TD. So we have TD equal to TD common. This means triangles क्या हो गए? SAS से congruent, तो triangle TPD is congruent to triangle TQD. This means, अब ध्यान से देखो, let me just erase off so that it looks a little more tidier. So now we will be considering these two angles, 1 और 2 लिया था, अब इस 3 और 4 को लेते हैं. So we know that पहली बात तो PD equal to क्या आ जाएगा? DQ CPCT से, तो पहला पार्ट तो हो गया. By SAS, this implies PD is equals to DQ by SAS, पहला पार्ट तो हो गया. Then next part में angle 3 equal to angle 4 आता है, oh sorry, CPCT से. So angle 3 equal to angle 4 by CPCT. We also know angle 3 plus 4 linear pair है, equal to 180 degree, linear pair. Now इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 times angle 3 equal to 180 degree. Angle 3 क्या आ गया? 90 degree. This implies that PD, PQ is perpendicular to OT. So yeah, you proved equal, you proved congruent, and then hence proof. So this is how you do this question. This is a particular question जिसमें आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी. दूसरा तरीका जो मैंने आपको इससे करने का बताया था, that was to prove this is a kite and then use the properties of kite to do this. But I recommend using this because this is more commonly used. PD DQ prove करना है, बस तब भी यही करना पड़ेगा. You have to go through the exact same steps. अच्छा, सिर्फ उतना ही कर दिया, सब incomplete है ना, because you have to show perpendicular also. You have to show perpendicular and bisector. Perpendicular bisector तभी लिखा है ना, right bisector of the line, which means perpendicular bisector. So like we have discussed all the questions and this was your test. I don't think this is easy. This is difficult. This is normal level paper जो आप बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो. Nothing less than this. These are all questions that are very much expected to come in boards. Yeah, that's it.